Hello. So the question is, a planet is observed by a astronomical refracting telescope. Okay, having an objective focal length is given to us 16 meter and the eyepiece focal length is given to us 2 centimeter. Now here basically we have given some of options in which we have to find which one is correct. Okay, so let us check one by one all the options. So in the very first we have given the distance between the objective and the eyepiece is 16.02. Okay, so now let us talk about for the A. So now here we know that whenever we are talking about distance between the objective and the eyepiece, it is said to be L. It is denoted by the L, and the L is basically equals to FO plus FE. Here the FO will represent the focal length of the objective and FE will represent the focal length of the eyepiece. Here FO is given to us, that is 16 meter, and FE is basically given to us 2 centimeters, so you can write it 0.02 in meters. Okay, so now let us put the values here. So here the FO is 16 and it is 0.02, so the overall it will be 16.02 meter. So in option A, the distance between objective and eyepiece is 16.02, means this is correct. Now let us check the next one, in which we have to ask the angular magnification of the planet is minus of 800. Okay, so for B you can find angular magnification. So we know that angular magnification can be find out by simply saying that it is minus of the f of you can write f of objective. Okay, f of objective, so let us say fo upon f of eyepiece, means fe. Okay, so now let us put the values here. So minus fo is given to us 16 and the fe is given to us 0.02. so when you remove the point you will get 20 in the numerator, and here you will have the answer is 800. Sorry, it is 800. So now let us check the option. Angular magnification of the planet is 800, so this is the correct one, minus of 800. Now here the whatever the image is formed here, okay, in the telescope. Okay, so image is basically is inverted always. Okay, so the image that is formed by the refracting telescope is inverted. This option is also correct one option. Okay, and in the D we have given that the objective is a larger than eyepiece, that is also correct. And that whenever we are talking about for the telescope, so in the telescope this is objective and this one is eyepiece basically. Okay, so as you can see this in the aperture, the objective will be the larger one as the eyepiece, but it is just the opposite case in case of the microscope. Okay, so in the microscope this is this eyepiece will be the larger than the objective one. Okay, so this is also the correct, means all options are correct. Thank you. सो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A system of three polarizers P1, P2, P3 is set up such that the path axis of P3 is crossed with respect to P1. अच्छा, क्रॉस मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर है. P3 P1 के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है. मैं P1 को क्या मान लेता हूँ? 0 मान लेता हूँ. P1 को क्या मान लेता हूँ मैं? 0 मान लेता हूँ. तो ये P1 है हमारे पास. ये P1 है, इसको मैंने 0 डिग्री पे मान लिया. ठीक है. और P2 इनके शायद से बीच में है, तो P2 को मैंने ऐसे कुछ मान लिया, कुछ डिग्री पर होगा, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे. और ये P3 P1 के रिस्पेक्ट में क्रॉस है, यानी 90 डिग्री पर है. तो ये तो बन गया. अब P2 देख लेते हैं. अगर P2 बीच में नहीं होता ना, तो हम सीधा आंसर लिख देते क्या? इन्फिनिटी. क्योंकि I क्या हो जाता? 0. आई गेस आपको इधर दिख रहा होगा, ये आई नॉट पर आई पूछा हुआ, तो आई जाता ही नहीं, तो 0 हो जाता, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता? इन्फिनिटी. लेकिन अब P2 बीच में दे रखा, तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मतलब सही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है. अब देखते हैं. पास एक्सिस ऑफ P2 इज इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू द पास एक्सिस ऑफ P3. यानी अगर मैं P3 के रिस्पेक्ट में देखूं तो P2 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है. तो यानी वो P1 से कितना इंक्लाइंड होगा? 30 डिग्री. इजी. तो ये 30 डिग्री पर मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया. ठीक है. ये कितना होगा? दिस इज थीटा. और थीटा इक्वल्स टू क्या है? 30 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू क्या है? 30 डिग्री. ये मुझे पता चल चुका है. अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है? आई निकालना है. आई क्या है? तीनों से जब पास हो जाएगी तो आई नॉट कितना बचेगा? दैट इज आई. तो अब मैं निकालने की कोशिश करूंगा. ठीक है. इजी लग रहा है. अब पहले P1 से P2 के लिए देखते हैं. ठीक है. तो उसको मैं कुछ आई डैश बोलता हूं.
सही है। तो आई डैश कितना होगा, अपना मालस लॉ है। मालस लॉ क्या चीज़ है कि कॉस स्क्वायर फाई से वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी उनके बीच में थीटा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अनपोलराइज लाइट थी आई नॉट, अब आई नॉट बाय 2 बची होगी जैसे पहले पोलराइजर से गुजरी होगी, तो आई नॉट बाय 2 बची होगी। फिर जैसी सेकंड से गई होगी तो कितनी बची होगी, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है 3/4, रूट 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 3/4। अब एक और मैं आई डबल डैश ले लेता हूं, ये कितनी बची होगी, ये वैसे यही हमारा क्या है आई, ठीक है, ये क्या है हमारा आई, ये कितना होगा, इसका जो आई डैश है इसका भी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3i0 बाय 8, 3i0 बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना होगा 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास क्या आ चुका है, आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3i0 बाय 32। अब हमें सिर्फ रेशो लेना है, रेशो किसका लेना है हमें, आई नॉट बाय आई का, आई नॉट बाय आई का, ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा चाहिए होगा तो इसीलिए उसने आई नॉट ऊपर रखा और आई नीचे। तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, अगर आप देखोगे तो 32/3, 32/3 रफली। अगर आप अब आप देखोगे तो ये कितना होता है 10.67, ठीक है 10.67। सो हमारा आंसर आ चुका है 10.67 होगा इसका रेशियो, नियरली हमसे पूछा गया है तो 10.67। और अगर इसको और भी राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू 11 के लगभग आ जाएगी। सो हियर आवर क्वेश्चन एंड्स। Hello everyone. So we have a question. Question says that in a double slit experiment, when a thin film of thickness T having refractive index mu is introduced in form of one of the slit, the maximum at the center of the fringe pattern shifts by one width. The value of T is lambda is the wavelength of the light used. So in this question, I have to find out the thickness of that slit which we introduced. Suppose first we will make a diagram. Suppose it's a young double slit experiment. So first we will make 2 slit. This is screen. So now suppose this is our first slit, this is our second slit. Now a slab is introduced in place of first slit having refractive index is mu, and suppose now we know here shift in this case that is equals to delta x. Now wavelength introduced on the slit is lambda. So wavelength of light used equals to lambda. Now shift is, that is delta x, equals to, if mu is the refractive index of this slab, then we will use formula to find out delta x, that will be equals to mu minus 1 into t. So now mu minus 1 into t. So here it is given that refractive index mu is introduced in form of one of the slit, the maximum at the center of the fringe shift by one width. So it means that will be equal to 1 width means n lambda, that will be equals to n is equals to 1. So we will put value lambda. So we get lambda equals to mu minus 1 into t. So here t, that will be equals to lambda divided upon mu minus 1. So it is our required thickness of this slab, that is equals to lambda upon mu minus 1. Hence option C is right. Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, in a young double slit experiment, the ratio of slit width is 4:1. The ratio of intensity of maxima to minima close to the central fringe on the screen will be. Our options are given in the question, these 4 options. So in this question, we have to find the ratio of intensity for maxima to minima. So basically, it is I max divided by I min we have to find. The ratio of width is given to us, that is W1 divided by
W2 is equals to 4 by 1. Now we know that the intensity of light depends on the width of the slit. So we can say that the maximum the width of the slit, the maximum the intensity. So intensity will be directly proportional to width of the slit. So from here we can write I1 divided by I2 will be equals to W1 divided by W2 is equals to 4 by 1. So this is the ratio of intensities. Now if we come towards the maximum intensity I max, that is equals to under root of I1 plus under root of I2 whole square. So when we calculate this, this is under root of 4 plus under root of 1 whole square. This comes out to be 3 square, that is 9. Now if we talk about the I min, this is equals to root of I1 minus root of I2 whole square. So this comes out to be root of 4 minus root of 1 whole square. So this is equals to 1. So we can clearly see that our I max divided by I min ratio will comes out to be 9 divided by 1. So this is our final ratio. So from here our correct option is option D, 9:1. Thank you.